हेलो एवरीवन, आई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो लेट अस चेक कि आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं. व्हाट आर द मैसेजेस फॉर योर कनेक्शन एंड द पर्सन दैट यू आर करंटली डीलिंग विद, और मे बी द पर्सन दैट इज करंटली ऑन योर माइंड. ओके, जिनके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो उनके फीलिंग्स एंड उनके थॉट्स आपके लिए क्या है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन दैट यू आर डीलिंग विद, एक तो वो पहले तो फायर साइन हो सकते हैं बिकॉज वी आर सो मच ऑफ फायर एनर्जी प्रेजेंट इन द रीडिंग बिकॉज आई हैव ऑलरेडी शफल्ड अप द कार्ड्स. सो वो एक फायर साइन दैट इज लियो, सेजिटेरियस एंड एरिस हो सकते हैं. Okay, so Aries, Leo or Sagittarius, it could be you, your person. If it is not the case, please ऐसा मत सोचना कि these messages are not resonating with me or my connection. Okay, so whatever fits in, take it, and whatever does not, please let it go. Okay, so ये आपके जो person है वो एक fire sign हो सकता है. That is a possibility, right? Secondly, the second major or specific message that I'm getting here is ये जो person है वो एक performer हो सकते हैं. It could be your person might be a stand-up comedian, or maybe you love to visit stand-up comedies and you love to watch stand-up comedy. Okay, आप दोनों को अच्छा लगता होगा, ऐसा एक possibility है. Secondly, I'm getting the word ring master. I don't know why, but this is a specific word that I'm getting. Maybe a ring, you are thinking of offering a ring to your person. Okay, हो सकता है कि ये आपके person के दिमाग में है. Okay, चल रहा है. Secondly, आपको अभी पता है कि the actions are supposed to be taken by me. Okay, and सो आपको ये डर है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया इस कनेक्शन के लिए देन आई माइट लूज दिस पर्सन एंड यू डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन. ओके, सेकंड, यू आर ऑल्सो ऑब्जर्वेंट. ओके, यू आर ऑब्जर्विंग योर पर्सन्स एक्शंस, यू आर ऑब्जर्विंग व्हाट दे कैन डू फॉर यू, एंड यू आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर, देयर रिस्पॉन्स, देयर रिएक्शंस. ओके, एक्सेट्रा. सो ये भी एक हो सकता है. ओके, सेकंड, इफ दिस कनेक्शन इन्वॉल्व समबडी प्लेइंग गेम्स, प्लीज बी अवेयर. हो सकता है कि आपको ऐसा डाउट है मन में या फिर आपके पर्सन को दैट दिस पर्सन इज the other one is playing games with me. Okay, so please be aware, and if you are really sure about this person, then please take steps accordingly and move forward by considering all the aspects. Okay, secondly, आपके जो ये person, I don't know why but I'm getting sword. So sword is a symbol of communication. Yeah, so sword, we don't have swords in the reading, but yet I just could channelize the message. So sword is a sign of communication. So communication is very important. Communication is the key in the connection that you are currently in. So communication अगर नहीं चल रहा है या फिर कुछ blockages है या फिर कोई misunderstandings हो रहे हैं, then please try to meditate more. क्योंकि ये जो person है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये person बहुत ही spiritual है, spiritually awakened हो सकते हैं. Okay, transformation journey उनकी काफ़ी traumatic रही होंगी. Okay, and now they have become very peaceful due to their spiritual practices. This could be a case, and it could only resonate with a few of you. If it resonates with all of you, then it is well and good. Fine. So ये person है वो काफ़ी ज़्यादा intellectual हो सकते हैं. Okay, they like to read books. So ये जो आपके person है वो अभी उनका studies, आपका studies चल रहा हो सकता है. Okay, or maybe they are wanting to study further. Fine, and they like to stay updated and upgraded. That's what I feel. Okay. Secondly, I don't know, but the only message that I'm getting is third eye chakra and meditation. So you are supposed to heal your third eye chakra, and हो सकता है कि आपका intuition जो है वो आपको कुछ answers देना चाहता है, but you are not paying enough attention to your intuition or the third eye chakra. So this is a guidance for you कि आपको जो भी answers चाहिए, आपके मन में जो भी questions है उसके answers already आपके अंदर present है. Okay, your intuition is trying to tell you something. Okay, so please pay attention to it and listen to your spiritual guides, spirit guides. Okay, and your inner self. Fine, try to connect with your inner self more by meditating. Fine. Let us check what are the angel messages for you now. Okay, meditation brings answers. Yeah, this is a confirmation from the angels, a confirmation from your spirit guides that so meditation is quite important for you in order to receive all the guidance and to gain clarity about your situation. We have reconsider. So please अगर आप बहुत ही confused है या फिर अगर आपको लगता है कि there are many choices present around you, please look inside of you what you really seek. Okay, आपको क्या खुश रखता है, क्या आपको चाहिए truly, what your soul deserves and what your soul wants, वो आपको सिर्फ meditation बता सकता है. So please take a step back before coming to a decision or a conclusion. Okay, so yeah, हो सकता है आप compare करते हैं किसी और person के साथ आपके person को. Okay, so try to meditate more in order to get clarity. Okay, perfect timing. Yeah, so it's all happening in the perfect timing. The angels are making it happen in the divine order and divine timing. So please be patient. Okay, let's check what else do we have. Oh wow, romance. Okay, so next we have is helpful people. Yeah, so हो सकता है कि आप इस person को मिले हो और
एक हो सकता है कि अरेंज्ड मैरिज सेटअप हो सकता है आपके कनेक्शन का. आपको कोई a group of people have brought the two of you together, और मे बी आप दोनों को कोई थर्ड पर्सन हेल्प कर रहा है. ओके, एंड यू बोथ नो दैट इट्स मूविंग फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. द कनेक्शन दैट यू शेयर वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जा रहा है. ओके, एंड लीडिंग टू रोमांस डेफिनेटली. ओके, सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. सो आपके अराउंड जो हेल्पफुल पीपल है उनकी हेल्प आप ले सकते हैं टू गेन क्लैरिटी, और मे बी इवन इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग, or maybe you can also ask for their opinion before coming to a conclusion or decision. Okay, this could be a case and it might not resonate with all of you. Okay, and it might help a few of you as well. So romance is on the cards, and long term relationship मुझे lag रहा है. And also we have this heart symbol here. Okay, maybe you guys are planning to have and to build a good family, a happy family. Okay, so that is another message that I'm getting. Yeah, so these were my messages, guys, and I hope they resonated well with you and the situation. And yeah, so stay blessed. I'll be back with another reading soon. Till then, take care. Bye bye.